Good morning, everyone. Am I audible? So, did you people see the question paper yesterday? हाँ एक हाँ वो जो क्योंकि and in fact yes, see that's the thing I was also talking about on the group also. No, why philosophy? This is the thing. Like ultimately you revolve around a very small topics. घूम फिर के फिर बोलते हैं ना हिंदी में जैसे घूम फिर के उधर ही आते हैं. So what is the benefit is if you have written it once, answer might be like today if you're writing, like tomorrow if you're writing some answer in the class, the answer might not be very good, but the first attempt is already over. Now the similar question or almost same question or question based on the same content, if you're asked to write, automatically your answer will be better than the previous. Automatically, that's how it works. And obviously what happens is if you have revised it many times, because this is the thing, if you write the answer and you know that you are not able to write the answer, then suddenly that urge is there. No, I have to go and watch, read the things again. That also helps. That's like need based learning it is called. So you create a need. So that's why my always this thing is write. And I was also talking with Gayatri because she had some doubts about whether that you also had, whether focus on writing a model answer kind of thing or anything of that sort. So I said, see, that you do whatever you want to do. But the best thing is to first and foremost attempt to write the answer in time bound as if it is a test. Later on, you do whatever you want to do. You take it forward with a very good answer, corrected answer, or in the form of notes, whichever way. As long as two things, as long as you're writing down the content on the paper yourself, one thing that is revision and notes and things, and you're also writing answers to the question in that 6-7 minutes. All is philosophy, nothing else. Literally, there is nothing else. Okay. And most of the questions, even paper 2 also, many questions are like the context. See, this is another thing that we discussed something and which was not part of the syllabus. Like for example, in the previous batch, if they remember, we discussed about when we were discussing about humanism. So somehow I started explaining humanism from Kant and Enlightenment and like that. Okay, that was not the typical syllabus points. Humanism is a technical term in the philosophy thing, but we discussed because we already studied Kant. So how categorical imperative, morality, God and things evolved, and it went to humanism. Question asked was like that. What was the impact of Enlightenment on humanism? So this is because how you understand things. So some things obviously we need to read and remember, but most of the things you need to understand, then read and then remember. And if you understand any question you can tackle, even unexpected question also you can tackle. So whenever I say write, please write. Okay. And as I said, your answer might be very, what we can say, not even giving you 2 marks out of 10. Don't worry. Just write. After writing, you might throw away that answer sheet into the dustbin and write it again. That's not an issue, but write. Okay, very important in philosophy, and especially with respect to philosophy, because syllabus is very limited. So usi cheez mein, if you have a boundary fix, okay, and it's within that boundary the question are going to ask. Okay, so what would be better thing? Visit every place again and again, because it's boundary. No, see, not like, see, the open-ended questions, syllabus open-ended, because what happens in history and other optionals is like they have some topic here and they can ask anything related to it. So there is no boundary, there is a center point. This is a hub model. So this is the boundary model, in the sense within that nothing from outside will come. Okay, and even if it goes outside, it will be like this much only. थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. Okay, you need to understand the specific requirement of this option. Okay, now we had
started, but unfortunately, suddenly I had to go and all that. So we had finished with introduction to Western philosophy. That was just an introductory thing so that we can take it forward. So today we'll start with Plato. Okay, and if you see the syllabus also, Plato and Aristotle, they have put together. Okay, in that the forms of a theory of forms, substance is basically what Plato, see, the substance thing is everywhere. So I don't know why they have mentioned substance, because substance, every thinker has talked about some other way about substance, but it's okay. So their concept of substance. But basically ideas, form and matter is Aristotle, and causation, actuality, potentiality, Aristotle. So Plato is Plato, Aristotle, basically good that they have put in together, because they are basically to be considered one thinker only, with one person writing something, Socrates, Plato, that is Socrates, and somebody coming and correcting it. It's like a team, like Vedanta school, you can say, like, Shankaracharya, Ramanujacharya, always together like that. So Plato and Aristotle, though they have their own, obviously, different philosophy, very different philosophy. Now, okay, so we discussed about Socrates, if you remember anything. Socrates, Plato, we discussed. See, Socrates is the guru of Plato. Okay, so Socrates, Plato, Aristotle. This is proper guru shishya wala scene, and they had their group of people, and Plato तो had his own academy, that is आश्रम बोल सकते हैं एक तरीके से उस समय के तुलना से. Knowledge is virtue. So for him, the most important thing is to know, and to know is the famous quote. Yes, he is considered to be the wisest man in the Greece. So there was this उसको बोलते हैं oracle. Oracle means आकाशवाणी. You know what is आकाशवाणी? हाँ, मतलब some godly voice will come from आकाश. कंस के कंटेक्स्ट में आकाशवाणी हुई थी कि इसका 8वां पुत्र जो है आपका वध करेगा. So that's why he kept on killing everyone. तो ऐसे oracle बोलते हैं वहां पे. तो डेल्फी करके वो देवी थी, तो उसने किया था कि Socrates is the wisest man in Greece, on earth, whatever. So people came to him like, something like this came up and all. He said, he obviously did not agree in that way, but he said, maybe because I know that I know nothing. So I might be wisest, not because I have knowledge in the sense of information, but because I know that I know nothing. And the point here is to question. So the moment you don't know, genuine sense of don't know, what would happen? You would like to know, because knowing, observation is a natural urge in every human being, actually every animal for that matter, if you see that way. Anything new, any animal sees, they are alert. They'll like to look for it, like what is it? See any animal for that matter, any new thing, any change, they will see. Now, their capacity to observe or conceptualize might be very limited, but still. So he says to know is the most important thing. And how to do it? Question. So this questioning thing was started by Socrates, and similar thing was taken forward by Plato. Now, but here the debate or the main issue started with Plato is about knowledge. Now, Socrates was more like a saint kind of person. Okay, he had knowledge is virtue, and he used to think that morality comes with knowledge. If you're more knowledgeable, you will be automatically, or wise, you become automatically moral and all that. So everybody should strive for knowledge, because knowledge is the good thing for the society also. Now, but what is knowledge? Then see, that's the reason Socrates is not part of our syllabus, because he was, as I said, he was like Ramakrishna Paramahans and Vivekananda. So Vivekananda was the person who actually properly philosophized what Ramakrishna Paramahansa was trying to say.
Okay, so that is the thing. Same thing would happen with Plato basically. So Plato was more sophisticated and articulated in his philosophy. That's why his part we are like studying his philosophy. So before Plato or during Socrates also, there was this uh, group of people who are called sophists. Okay, sophist basically not a very positive term, like charvak समझ लो एक तरीके से. Now sophists are like charvak only because sophistry is a negative word. Sophisticated is coming from philosophy. Actually, Sophy, the link is like this. So they initially started talking like they know things. That's why people started calling them sophists, or maybe they started calling themselves sophists. जो भी हो. But they started appearing as if see, you need to understand one thing. उस समय knowledge मतलब कोई एक भी छोटी सी भी चीज बड़ी मतलब जो कर दे बता दे knowledge के बारे में वो बड़ा would be considered the somebody who has knowledge, because आम आदमी are not, they are not having any clue as to ऐसे सोचना भी है, जो दिख रहा है वो है, आगे चलो. So they started telling that perception is knowledge. That's why I said Charvak. And in the same way, even Charvak is like materialist. So materialist is also a negative term, and nobody would like to call themselves materialist in that way. Philosophically it's okay, matter is only reality one, but then next level of materialism is hedonism. वो तो किसी को फिर एग्री नहीं करते कि I am not hedonist, I am telling whatever is good thing for society and all that. So sophists used to say that knowledge comes through perception. So knowledge is, so when knowledge is perception, this was the trend before. So knowledge is perception, then what is the point in asking questions? Whatever you see is true, whatever you don't see is not true. That's all. As simple as that. So, and same is the thing, if you remember about Charvak, we had discussed that to question is to think is to infer. That means to question is not the way of knowing things. Whatever you see is the way of knowing things. See that. So, knowledge is perception and man is measure of all things. It is called homo mensura. Homo mensura means man is measure. Measure मतलब measurement वाला measure. तो जो भी है, human being is the center of knowledge. So if I perceive, whatever I perceive is true for me. So man is measure of all things. Means whether it is true or false would be decided by whom? My perception. And that's all. Like Charvak saying. Now, obviously, somebody who questions, somebody whose brain is little more active, he or she can see things through. नहीं ऐसा नहीं है जैसे दिख रहा है. We do it in normal life also. छोटे बच्चों को तो जो दिखता है वही मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. तो वी हैव ना, जो हर कोई चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, जो बोलते हैं, जो मुहावरा बाद में बना. सो जो दिखता है वैसा होता नहीं है. दिस व्हाट डज इट मीन? That perception is not always true knowledge. There are many deceptions in the nature, in the world. So you need to think. And how do you think? What is thinking? And all that is important then. So now, this was later on made very sophisticated and articulated by Kant. Like what exactly is thinking and all. But at the time of Plato, it was like perception is not knowledge, because perception goes wrong. In that case, anybody perceives, I am hallucinating and I am seeing some elephant standing here very strongly. I am seeing it. Does that mean that it is true? No, it is that I am hallucinating. But homo mensura, whatever I feel is true for me.
So I should behave accordingly. So I'll go and sit on the elephant. No, I'll fall down. There is no elephant. You cannot even sit because there is no elephant. So basically, knowledge does not come from perception, because perception goes wrong all the time. Now, you will be able to understand the similar parallel views that we discussed in Indian snake and rope. So perception is mistaken many times. Now this was argument same like sophist. The same argument was given by Charvak also. Because जो दिख रहा है वही है, बस खत्म. There is nothing else. But Plato said no. Knowledge is not perception. So knowledge is what? Knowledge is conception or concepts. Basically, knowledge is concept. Right? So knowledge is concept. Now, what does he mean by concept? Now, later on, he said concept mean ideas, forms, many things. The technical words he used. Same is the case. Like theory of concepts, theory of ideas, theory of forms means the same thing by Plato. So, like, what is this chair? What is that chair? What made you to know, grasp, receive two different things altogether as the same thing? पर्टिकुलरिटी तो ठीक है, वो तो अभी बात नहीं है. बेसिकली क्या है, when you know something, exactly, very good Gayatri, when you know something you actually know the universal attached to it. Now universal is no, that is Vyapti, universal, samanya. So class character. So basically whenever you know anything, you don't know that through perception. So if at all it has to be perception, then what would you perceive? Only 5 things would you perceive: the color, the touch, the taste, the sound, and the smell. 5 things. But what would you do with these 5 things? Nothing. Like if I separately tell you brownness, something is brown, something is having this kind of touch, this kind of taste, this kind. How would you know that it is chair? Form to hai. So how do you know the form? Which sense tells you form? See, I know which sense tells me sound, smell, taste, touch, okay, and hear, or vision. So these 5 I know, but which form tells you which sense organ for that matter tells you the form? No. So there is no sense organ which actually takes in form. That means, and basically form is what knowledge is. Otherwise, separately, the color, the taste, smell, blah, blah, perception, whatever sense organ gives you, without having the understanding of the forms, you cannot know the thing. You can know that it is brown. You can know, like for example, apple. Apple is a very good because it has taste and smell and touch and color all, right? So you have apple. So the touch, the taste, the smell, everything, only these are discrete data for you.
Because, like, for example, same is the smell in a particular scent or deodorant, whatever, for apple flavor. You may feel that there might be some apple here, but there is no apple, because only smell is not apple. Only redness is not apple. Only roundness is not apple. So what is apple? Essence. Very good. So essence. What is the essence? What is the essence of apple? Now it is very difficult to name it anything. Like, where is the essence of apple? What is the essence of? We can't say redness is the essence of apple. No, it's a color of apple. It's a quality. Exactly. यही एग्जैक्टली आंसर है, बिकॉज दूसरा कोई आंसर है ही नहीं. Apple has something apart from the redness, the sweetness, the in particular smell, blah blah, roundness, blah blah. उसके अलावा भी उसके पास कुछ है, वो appleness है. Yes. Now I'm sure this is not new, because we have been discussing in Nyaya also this, the concept, the appleness. Yes. Even for that matter, there is some other fruit that you have not seen before. We see that, अरे ये apple जैसा ही लग रहा है. You know, it seems like it is apple, but when somebody tells you, no, it's not apple. Okay, apple जैसा ही है, बस थोड़ा उसमें से sweetness हटा दो. So what makes you feel and know for that matter? Because it's not feeling, it's not an emotional knowledge or emotional change in you. It's a proper knowledge, because the same apple again and again you will call it apple. Now you may see, no, then if there is, बच्चों का जैसे खेलने वाला एक एप्पल होता है, प्लास्टिक का होता है ना, छोटे बच्चे के लिए होता है, वो तो एप्पल नहीं है, लेकिन हूबहू एप्पल दिखता है. What would you call? So that is when you go and actually inspect it properly, you still know that it is apple, but it is a plastic apple. Now, what does it mean by plastic apple? Means it is apple, it has appleness to some extent, but it's a plastic, it's not a real apple. It's a plastic apple, which is okay, and it's a deception. This particular apple is created for deception, yes or no? The manufacturing of that plastic apple is to make you feel that it is apple, because some appleness is added into it. So same is and this is the concept of cowness also. So when he says knowledge is not perception, what he tries to say is, you know things not because it is red, not because it is sweet, not because it is this particular, that, and this. It's because it has some appleness. Now this appleness is, as you also mentioned some time back, this appleness is very close to the particular form of apple, right? So sometimes he uses the word, this concept of appleness, as form also. Okay. Another thing, he uses the same thing, another word, the word that idea, because it happens in a idea way, like how you get an idea, it is happening in idea way. That's why sometimes he called it theory of essence, theory of ideas, theory of form, theory of concept, all are same, but in different context the word is used. So essence, in the context of essence, means what? Essence means atma. Now you understood, something inessential, without that thing is not that thing, is essence. So atma is what? Same. बोलते ना कि उसकी अगर आत्मा मर गई तो फिर सभी चला, उसमें कुछ है ही नहीं फिर. If there is no atma in the body, means there is only body. No, then spirit, if you say, it goes slightly again towards religion, then shifting. Again, they are connected to each other, but atma means essence basically. Now in Indian context, atma means essence also, atma means consciousness also, because consciousness is essence. Without consciousness, there is
Do you remember what we see? The word Atma is used by Vedantins. Now, what is present? This 5 sheets. Okay, and the last one is pure consciousness. So, pure consciousness means only consciousness. Pure means what? Only consciousness. Consciousness only. Okay, there is no further thing than consciousness. So, pure consciousness, only consciousness. So, only consciousness is what? Atma. So, why it is called Atma? Because that consciousness is the essence of that thing. You're getting my point. So, the word Atma and essence are very much together. But yes, Atma is also used as consciousness because their consciousness is considered to be the essence. Without consciousness, there is no human being. So, Jiva without consciousness is not Jiva. Now, the word Jiva is the English translation for the Jiva is spirit, animate, spirit. But Atma is essence consciousness. Both together put is called Atma. That's why Atma is a proper word, very famous word. That's why. Okay. Anyway, now you would be very like, see, the point is all the philosophies, as I have been telling you, telling the same similar things in a different context. You know, दिमाग का जो उनका thinking है थोड़ा सा अलग अलग करके अल्टीमेटली वही चीज बोलेंगे. Now, this is also whatever criticism of Charvaka received is exactly what Sophists are receiving now. And whatever Sophists are saying, Charvak said. Okay, now that's why, as I said, sophistry. Okay, I was telling. Sophistry means what? Sophistry is a negative word that is सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इंटेलेक्चुअली, उसमें कुछ है नहीं, तो सोफिस्ट्री बोलते हैं. मतलब यू नो this is sophistry, like somebody is telling as if things are very intellectually sound but there is nothing in it. Basically that is called sophistry, like sophist, because there is a perception is this, that. See, it's all nothing. If you are talking about perception, then there is nothing to discuss. What is the difference between you and an animal? Nothing per se, as long as you are thinking, as long as you are not relying on ideas, concepts, forms. What about essence? How do you know chair without actually having the experience or having the knowledge of essence of chair? That is chairness, cowness. Now, it's not just putting ness. Okay, it's not just English में किसी भी चीज के सामने ness लगा दो ऐसे, वो that is okay, correct है, लिखने के लिए वो correct है, किसी भी चीज के सामने ness लगा दो. But what exactly you are talking about when you are putting ness after cow or chair? What is that cowness? That is the concept of cow. That is the form of cow. That is the essence of cow. समझ में आ रहा है? Idea of cow. सामान्य, same चीज. I hope you are getting this. Now, ये first of all, there is generality. Now, वो कैसे कैसे आती है? Everybody has different points of view. Like we already discussed this, if you remember. Buddhist will say it is a nominalism. No, it's just a name given. Somebody will say that no, it's a realism. जैसे न्याय वैसे. No, they सामान्य in itself as a real category, right? Vedantins will say that it's a concept, like it's only it's an idea. That's all. And here their idea means just idea, nothing else. Reality तो ब्रह्म ही है सिर्फ. बाकी तो आपका जो भी विवर्त के हिसाब से बनेगा वैसे है. But basically fight is between nominalism and realism. So nominalism is what? और नाम दे देते हैं. So what they say that chair, वो brownness, particular shape, ये वो मिलके आप बस उसको chair बोल रहे हो. जैसे redness, sweetness, particular smell put together is called apple. So, and same is the case with, then you'll see lock, you'll understand. Apple is substance is suppose वो आएगा जब lock पढ़ेंगे. So the point is बात वही होगी. You don't think that some every time some new thinker means पता नहीं और पता नहीं नए चीजें याद रखनी पड़ेगी. नहीं, everything they are talking about knowledge only. Different words they're using, substance, ideas, forms. You need to understand in what context they are meaning what. That's all. So yes. So everything has essence.
So this is called theory of essence. Now you understood. Now theory of essence. Now tell me, if I am talking about theory of essence of things, am I talking about epistemology or metaphysics? How? No, it is metaphysics. What I am talking about? Essence of what? Am I asking how to know that essence? How to know that essence is? And having that essence is? This is exactly was the first question yesterday. How Plato puts the connection between metaphysics and epistemology. How his theory of forms connects between metaphysics and epistemology. Now 10 मार्कर है, ज्यादा लिखना भी नहीं है, 1.5 पेज लिखना है, बस यही लिखना है, बस उसका थियरी ऑफ फॉर्म्स का इंट्रोडक्शन करना। वो डिस्कशन लूंगा मैं, उस समय भी आप बैठना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ओनली थिंग इज यू हैव टू रिवाइज, like how you can remember, how I can remember because I have revised it many times, simple है ऐसा कोई, otherwise there is no greatness as such। मैंने रिवाइज बहुत बार किया है, पढ़ाया है, इसलिए मुझे याद आ रहा है, इतना ही फर्क है, बट दैट मच इजी इट इज। इट्स लाइक श्योर शॉट, इफ यू रीड मेनी टाइम्स you will remember, okay? Those who have read more times will be able to tell you, better way, those who are students I am talking about। among the students also some have read it many times, they will be able to tell you इतना भी डिफिकल्ट कुछ है नहीं। अभी आपने खुद भी बोल दिया कि इतना टफ नहीं था, यू जस्ट स्टार्टेड इन अ वे, 1 महीना ही हो गया, सो इट्स अ गुड साइन एनीवे। सो theory of essence means, now so the problem is he started off with telling that सोफिस्ट जो बोल रहे परसेप्शन नॉलेज गलत है, नॉलेज परसेप्शन से नहीं होता, परसेप्शन कैन नॉट गिव एनी नॉलेज, परसेप्शन इज जस्ट परसेप्शन, इट इज द नॉलेज ऑफ द एसेंस what gives you knowledge of things। Now you remember, very similar to, we had this in Nyaya also, 5 senses, like 5 horses, they are coming together at one point, that is called mind। Now this coming together means what? Some synthesis is happening, synthesis। Now we cannot say it's arithmetic addition भी नहीं है कि ये भी आ गया उसमें ऐड हो गया, no, it's not arithmetic addition, it's a synthesis with respect to the situations and everything। हाँ, काइंड ऑफ यू कैन से अलग कॉम्बिनेशन बन गया एक तरीके से। हाँ, तो वो तो बाद में लिया था, ये राइट, देन वो मैंने फिर अर्जुन, सॉरी, कृष्ण और अर्जुन, ऐसा एक सीक्वेंस था पूरा, वो एक कंसेप्शन है, वो तो मेटाफिजिक्स, मतलब एक स्टोरी के रूप में लोगों को बताने का तरीका है, ठीक है। बट एनीवे ये एक परसेप्शन है, तो एग्जैक्टली ऐसा तो प्लेटो ने नहीं बोला है। व्हाट आई एम सेइंग इज perception cannot give you knowledge, what gives you knowledge is conception, and I'm pretty sure that you will also believe, any thinking person will believe, thinking person will agree to at least what I'm saying, yes or no, that you know things not just by looking at things, you think। And basically now here there is a slight difference। now you have been talking about mind being active, blah blah blah, he says, see, it's not mind who creates anything। now Plato is saying that perception वगैरह ठीक है, mind create कुछ नहीं करता। what happens is you know concepts, so knowing is the process happening on the thing called concepts। समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे ड्रिंकिंग होता है वाटर के साथ, ओके, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग होता है एयर के साथ, ओके, ईटिंग होता है फूड के साथ, ओके। और यहाँ पे ईटिंग, व्हेन आई मीन टू से, यू कैन से ईट, नो, ड्रिंक, सी जस्ट एग्जांपल, डोंट राइट, समझने के लिए।
what they are trying to say is to know what do you know. So you say I know chair, I know horse, I know cow. So you say that you know things. So basically you don't know things. What you know is concepts. समझ में आ रहा है? So concepts is not epistemological thing. फिर क्वेश्चन ये है ना, फिर कॉन्सेप्ट है कहाँ? What is concept? What do you know? Like I know chair is normally what we say, but he's saying no, you don't know chair. First of all, you see chair is only one thing. You don't know chair. Seeing chair is just perception, but you know chair means what? You know the concept, the essence of chair. That is chairness. Concept means, for example, chairness or cowness, appleness. So what you know is chairness. Okay, that means chairness होना चाहिए ना कहीं. समझ में आ रहा है? So to know chairness कहीं होना चाहिए. Yes or no? कहाँ है chairness? Correct. But can we say that this chairness is there in this chair in the world? We might feel कि chair में ही chairness है. वो बाद में Aristotle बोलेगा. He says no. We know chairness because chairness करके एक fixed, eternal, हमेशा के लिए एक कॉन्सेप्ट बनी हुई है कहीं. हाँ, वो भी आएगा, वो बाद में बताएगा. He says, पहले का बाद में बात करते हैं. वो बोलता है even if all the chairs in the world are destroyed, still can you make new chair? How? कैसे? That means chairness का concept are not dependent on individual chair. Yes or no? So he says even if all the chairs in the world are removed, all the cows in the world are removed, all the horses of world are removed, you still have the concept of chair, concept of cow, concept of horse. So chairness, cowness, horseness is still there. Where it is? Chair तो सब मर गई. हाँ. How would you look? What is the location? What's the locus of these ideas? कहाँ है वो? So he says all the concepts, ideas, forms are in the other world. Now other world मतलब religious point of view से मत देखिए वो. Transcendental world. Very good. So ideas, concepts, forms, essence, whatever you want to name it. Okay. Ideas, concepts, forms and essence एक ही चीज है. ठीक है. अलग अलग कंटेक्स्ट में लिया हुआ. And he uses this word interchangeably, but most common is ideas, because later on then a lot of criticism also will come, innate ideas and things like, because idea, substance, these things, essence, these things is discussed in Western philosophy all through. He is like setting the agenda for Western philosophy for time to come. Setting the agenda, भाई ऐसा है, because Western philosophy is very linear in thinking. You know, at a time एक ही philosopher चलता है, दूसरा आके उसको क्रिटिसाइज करके अपना बता दे, like kings. Indian philosophy ऐसा नहीं है. Even today we have somebody who is Buddhist, somebody who is Jain, somebody who is Vedantin, somebody who is Charvakin, somebody who is Buddhist. Even today. And other than that also we have. So, and they are parallel. The discussion, debate is happening, they are going parallel, like that. Like there it is like एक गया तभी दूसरा आता है, दूसरा गया फिर तीसरा आता है, like that it is. बहुत प्लेटो एंड अरिस्टोटल तो 1000 साल तक फॉलो किए गए, इसलिए उसको डार्क एज बोला गया. मैंने बोला था डार्क एज. हाँ हाँ बहुत.
कोई डाउट ही नहीं है, आफ्टर क्रिश्चियनिटी देयर इज नो चांस। सी अब्राहमिक रिलीजन का बेसिक ही जो है फेथ पे होता है, सो देयर इज नो चांस ऑफ यू आस्किंग मेनी क्वेश्चंस, ऑलरेडी देयर आर आंसर्स, सो यू डोंट आस्क। दैट्स व्हाई डार्क एज, नो, इट इज डिक्लेयर्ड बाय दे देमसेल्व्स ओनली, द डार्क एज ऑफ क्रिश्चियनिटी करके बोलते हैं उसको, डार्क एज ऑफ यूरोप। इंडिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड डार्क एज, हमेशा कुछ ना कुछ आता रहा है। Even if what is now Bhaskaracharya, even if Mughals were there was Bhaskaracharya who came up with geometry and many other things. He wrote poems and big literatures and things like kept on coming. Even in scientific field, some of the other things kept on happening. Even British were there was Jagdish Chandra Bose and others. Like later on, everybody recognized that it is him who should have been given Nobel. उनको Nobel तो शायद नहीं मिला है ना, but उनको बोल रहे थे कि देना चाहिए था, बोलते हैं, as far as I remember. Anyway, so that's okay. So point is, he says there is this over and above this world of objects. Now, you know this word Jagat. हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जी, एंड वो तो आई थिंक आई रिमेम्बर इट, नॉट वेरी फार, नो, जस्ट लिखा भी था आपने। So that's what I'm saying. If you write that, the moment you read that question, somewhere some confidence is there कि ना ये तो लिखा है मैंने. That's the point. Okay. So the word Jagat is used, no, in Indian philosophy. Like Jagat. Jagat means very clear. These objects, world, and things like that. In the same way, this term is used in Western philosophy. World of objects. मतलब जगत, ये चीज है जिसमें है physical world. So it's actually the term always is used is world of objects. So over and above this world of object, there is transcendental world. हाँ, over and above means beyond. दोनों सी बोलते ना कि over and above इंग्लिश में टर्म है ना, उसके भी परे, ट्रांसेंड, दैट्स व्हाई ट्रांसेंडेंटल, इसको छेद के जाने वाला, ट्रांसेंड करना. See, this transcendental is a very technical term. If you understand some terms of philosophy, you understand the whole optional philosophy. Like this, in that context, Jagat, world of object, transcendental, these terms. Paper 1 at least. And paper 2 also for that matter, especially philosophy of religion. Socio-politically little bit different. There are वो transcendental वगैरह की ज़्यादा बात नहीं करते. ठीक है. So basically what he is saying, and yes, इसमें और एक चीज है, यूनिवर्सल्स, सामान्य भी वही चीज है. ओके, उदाहरण. नाउ टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ आइडिया, फॉर्म, कंसेप्ट, एसेंस, यूनिवर्सल. आइडिया प्लेटो का, प्लेटो. फॉर्म्स, essence, universal, and concept. So all same cheez he uses. Any example? What is any example of the idea of Plato? Any example of essence of Plato? एक ही चीज है, मैंने बोला ना, this is all same thing. He takes it interchangeably. कोई भी एग्जांपल बताओ. See, okay, means what? Yes. कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे? जितने भी. So the point is, there is this parallel world somewhere. Now somewhere means over and above. He is not saying somewhere Neptune के beyond, ऐसे उस गैलेक्सी में, ऐसा नहीं बोल रहा है वो. Not physically. That's because we have been trained to think everything physical because of the over emphasis or emphasis in our life of science and physical science.
So we think that other world means ये छोड़ के इसके beyond एक दुनिया है, ऐसा नहीं, एक transcendental world है, उसके परे हैं. They are not saying beyond this universe there is another universe, ये नहीं बोल रहे. Transcending this universe there is another universe. बोलते ना कि like for example स्कूल में या कॉलेज में जो स्कूल टीचर परस्यू करते हैं वहां का लाइफ, ये वो अलग होता है, अपना अपना होता है. एंड स्टूडेंट का अपना एक उसके बियॉन्ड एक लाइफ होता है, उसी में वो अलग चीज देखते हैं. अलग होती है. तो बट देयर इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग. उसकी अपनी दुनिया, जो पोएट की दुनिया होती है वो अपनी दुनिया होती है, बट वो सब्जेक्टिव है. ये क्या बोल रहे हैं? दिस वर्ल्ड इज नॉट सब्जेक्टिव. इट्स नॉट अंजलि's world, it's not Vishwajeet's world, it's not Gayatri's world, it's not somebody's Shibani's world, not like that. These are individual words, like a poem. Now he's a poet only, by the way. Plato is a poet, by heart he's a poet, so he thinks like that. But he says no, I'm talking about objective world, not subjective world. मेरी थिंकिंग वो तो फिर वही हो गया ना, होमो मेंसरा हो गया. Yes, exactly. So he says over and above this world of object there is a world of ideas. तो ये सब कहां हो रहा है? This is world of ideas. Now world of ideas, world of universals, world of concepts, world, same, right? Concept in the sense of how we understand, universal in the context of universal particular, essence in the context of essential accidental, form in the context of form, idea in the context of idea. Now idea and concept is very similar to each other, but the term used by him is more frequent is idea. समझ में आ रहा है? बिकॉज प्लेटो का बेसिक समझने का चीज यही है. बाकी प्लेटो इज इतना ही सिलेबस में. वैसे प्लेटो हैज रिटन मेनी बुक्स, मेनी बुक्स, एंड बेसिकली हिज वर्क ऑन पॉलिटिकल साइंस इज स्टडीड बाय PSI और ऑप्शनल इन डिटेल. हमें उससे कोई मतलब नहीं है. द रिपब्लिक करके फेमस उसकी किताब है, प्लेटोज रिपब्लिक करके किताब, वेरी फेमस. लाइक वी हैड चाणक्य, उसी दौरान का है, आगे पीछे थोड़ा 100-200 साल, लाइक दैट. चाणक्य जैसे ही उसने लिखा हुआ है कि प्रैग्मेटिक, बहुत प्रैक्टिकल. मैंने बोला ना, प्लेटो हैड अ लॉट ऑफ डिस्गस्ट फॉर कॉमन पीपल, जो सोच नहीं सकते, जिनका दिमाग नहीं चलता ना, प्लेटो उनको एकदम थुतू टाइप्स कर रहा था. यूजलेस लोग हैं सभी, सोच ही नहीं पाते. So that's why his academy, very few people had admission. ठीक है. So that is because he was very intellectual but did not have the experiential or inner. See, this is the thing, what I also think is you need to have some spirituality for you to become a great person, because only intellectual capacity will not make you great. Later on, obviously it is revealed like anything. There are so many scientists, not having even a slight of morality, earning illegal, illegitimate, destructive kind of, getting into destructive kind of activities, earning money out of it. So many things happening. Engineers, doctors, so much brain. They understand world like anything. Their intellectual capacity is sharp, but does not guarantee the morality. But if you start from spirituality, your experience of yourself is your sense of self is kind of loosened. So there is no sense of self, so there is no self-serving, because self ही नहीं तो self-serving behavior ही नहीं होगा. Self-serving, yeah, anything. So because your self is broadened, वासुदेव कुटुंबकम वाला self आ जाता. कौन सा? Me and mine, yeah. So that is the reason whole Indian philosophy is to what? Get rid of this concept of self. Even Sankhya will tell you, you are not Prakriti, this my body, my this. No. Everybody will say, this is Vivarth. Get rid of this. Ramanujan also will tell you, don't focus on differences. Unity is ultimate. Jainism also will tell you, get rid of all the bodily pleasures and things. Buddha also will tell you. Because your identification of yourself with body is very innate, or very, not innate, I should say, intimate.
Like very closely we think that I am my body. So whatever my body and my ego want to serve, I will serve. That is self-serving. Self-serving is normally, if you say go word wise, it is like serving yourself. Now, what is your concept of self is important. You might be actually thinking my body is not myself, my family is myself, and many people do that. They kind of do not serve them their own bodies and mind. They compromise, sacrifice, but serve their own family because their self is slightly bigger. Like my kids, my husband, my wife, जो भी scene होगा, or my father, mother, जो भी. But sense of self, some people actually compromise their own life for the village, community, group of people, and this also happens. Local level के जो I'm not talking about political leaders, but good leaders, like local level. Now, somebody like Anna Hazare is also erstwhile, at least, because he has done a lot of work in Maharashtra. What did he do? He just sacrificed everything and did local level pay. He did the work. Okay, there is this place called Ralegan Siddhi, from where he belongs, and he has transformed that village like anything. Morning to evening, doing nothing else. Only this is like 20 years back. So he transformed that village, made it as much before he made it a smart village, all the water facilities and everything. Anyway, somebody does the same for the community, for the nation. So basically, that is what is the most important thing. It's not always self-serving. You have your better concept of self. That's why it is said that these Vasudeva Kutumbakam and broader perspective, Aham Brahmasmi, the universe is me, I am universe, and these kind of things imparted on you since your childhood. So later on, even if you have intellectual capacity, also you use it for everybody. Ye concept. Anyway, coming back. So chairness, cowness, appleness, okay, for that matter, circularity, beauty, these are concepts. Yes, you're getting the point now. So, ये सब मिलके, now this is the thing. There is chair where is this world of correct, basically empirical world, and this is world of now you will understand Plato and Vedantins have very much similarity, but he gives the connection. Like if there is chair, it is because of the chairness chair exists. उल्टा नहीं है. हम normally कैसे सोचते हैं? Epistemologically we first see the chair, then think and then reach chairness. अरे नहीं, chair तो कुछ नहीं है, chairness है. Later on, epistemologically, epistemological journey. आपको याद है हमने देखा था metaphysical journey and epistemological journey उल्टा जाती है हमेशा. Most of the time, because if you live in Prayagraj, for you Ganga is this, what is there in Prayagraj. So Prayagraj comes first, and then you go back to know the basic of Ganga. You travel back. So first Prayagraj, then comes other places, Haridwar, then comes Gangotri, like that. But for Ganga, first Gangotri will come. Like that, existence may first this exists, and this chair. Now, what is this chair then? This chair is like a copy of chairness. So, chairness is original. Every other chair is a copy of that original, like Xerox. Correct. You are absolutely right. So concrete, but he himself do not think in that line. वो later on जो लोग आते हैं उसको criticize करने के लिए concrete, abstract and ये सब use करते हैं. He is like world of, there is a transcendental world, right? And this is empirical world. Same, no? Paramarthik, Vyavaharik. Okay. And there also Paramarthik is the real. And these are copies. No, he is not saying illusion. He is saying copies.
That's the difference, no? Obviously. Shankaracharya, Vedantins will say obviously, Advaitins basically will say that it is an illusion, but they say no, it's not. थोड़ा बहुत same है, थोड़ा तो obviously different होगा ही, right? So chairness है, so corresponding to every object in the world of objects, there is class character idea, universal. Now this is universal also, right? Same thing, no? Universal, real, essence, concept, everything. So basically क्या बोल रहे हैं वो? It's like this. There is some original copy somewhere. Like Constitution of India जो रखी हुई है पार्लियामेंट में, original copy originally signed by all the members of the parliament, B.R. Ambedkar and other team, everybody, President of India, 26th of November 1949, right? उसी समय ना? हाँ, 26 November 1949. What we have now with us, जैसे आप भी पढ़ रहे होंगे, वो क्या है? कॉपी है of that original. कंसेप्ट के लिए समझने के लिए बता रहा हूं बस. वैसे वो ओरिजिनल फिजिकल कॉपी और ये कॉपी दोनों अपने आप में वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ही हैं, बट समझने के लिए. सो ही सेज दीज आर लाइक पैटर्न्स. साचा जिसको बोलते हैं, जिससे स्टेच्यू बनता है, एक साचा होता है, उसमें मिट्टी डालो, ऐसे प्रेस करो, निकालो तो गणेश जी आ गए. साचा, हाँ पैटर्न बोलते हैं उसको. हाँ नहीं, उसको पैटर्न, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांचा ही तो बोलते हैं जिससे मूर्तियां बनती हैं. नहीं, ढांचा तो स्ट्रक्चर होता है, उसको सांचा बोलते हैं. ओके, सांचे में ढल जाता है चीज. एनीवे, तो वो और एक चीज बात करता है कि आइडियाज आर लाइक, फॉर एग्जांपल, आइडियाज आर फॉर्म्स, एसेंस, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स. ओके, एज आई सेड, आइडिया इज द वर्ड दैट ही ऑलवेज यूजेस. आइडियाज आर पैटर्न, आइडियाज आर ओरिजिनल. Now, this concept of pattern is again used by Kant in a different context. But pattern means the same thing, like, something takes in something, and something is always. Now, there might be so many statues, murtis of Ganesh, but statue is only one. Pattern is only, and that pattern will decide the each and every shape. Like, अगर उसमें गणेश जी की सूंड अगर राइट साइड में है, तो सभी गणेश जी की सूंड भी राइट साइड में ही होगी, क्योंकि सांचा में पैटर्न इटसेल्फ हैज दैट डिजाइन. नाउ दिस, द वर्ड दैट यू यूज is exactly the word used by Plato, his theory of recognition or recollection. So how do we know things then? How do we know chair? So knowing of chair is not perception, it is just recollection of chairness that is already there in the soul. He's saying soul and things later on. So there is this called theory of recollection. Recognition is not the word used by him ज्यादा, but context वही है. Theory of recollection. Theory of recognition is later on modification, slight modification by Aristotle in that way. But recollection means it is already there. We just recollect it, and then we know. So what happens now? That's why he said, even if all the chairs in the world are removed, okay, you will have idea of chairness, or idea of chair for that matter, or chairness. Now, if you know the chairness, you can make new chair. Now, but you might ask, okay, but that is only after, because I have seen all the chairs in the world and I have chairness. He says, no. It's not that you created chairness by seeing many chairs in your life. 1, 2, 3, 100, 150, 1 lakh chairs देखे अभी तक, तब जाके chairs का imagine आता. नहीं. It's not that you have developed, your mind has developed. No, your mind has not developed it. Mind has just retrieved it, recollected it, which is already there in the transcendental world. No, transcendental world कहाँ है? अपने अंदर ही एक तरीके से, but वो अलग वर्ड, दुनिया ही अपने आप में अलग. Like मैथमेटिक्स की अपनी दुनिया होती है,
आईटी वालों की अपनी दुनिया होती है, उनके वर्ड्स अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है, वो क्या व्हाट दे मीन एक्चुअली। इवन फिलोसॉफी बात करने वाले, लाइक ऑल स्टूडेंट्स टॉक टुगेदर, तो फिलोसॉफी की स्टूडेंट्स की अपनी भाषा होती है, they will talk in their own language, their imagination, everything. So the point here is that this transcendental world has everything already. So basically what he's trying to say is this is the real world, these are just copies. समझ में आते? ये समझने के लिए, बस लिखना नहीं है। क्या सोर्स है कि so there is the source हर एक का, see every हर एक का source, and it's not source, it's a storehouse. In the sense, yes, it is a source, but it's a storehouse, it is already there, it's not sourcing from it, it's already there, you just recollect it. Gayatri is asking, so sir, is he theist? That concepts are created by, he is theist, he believes in God, he believes in transmigration of soul, like exactly like how Indian like Nainan Chidanti Shastrani Nainan Dahati Pavaka wala, you know this slogan na, that your soul cannot be, गीता में है ना, नैनन चिद्दंती शस्त्राणी नैनन दहति पावका, मीन्स आग जिसको जला नहीं सकती। हाँ, तो वो ट्रांसलेशन सुना है, बट संस्कृति है। एंड ये बाय द वे अगर आपको रटा हुआ है तो इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज यू कैन यूज इट एज इट इज इन पेपर, इट हेल्प्स यू, बिकॉज देयर इज दिस चैप्टर कॉल्ड सोल, इमॉर्टेलिटी एंड रीबर्थ, उसका पूरा कंटेक्स्ट यही है, तो गीता का तो श्लोक लिखेंगे, यू नेवर नो। जैसे इस बार आया था जो हमने लिखा भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, they may ask this श्लोक only from Gita, you know, elaborate this श्लोक in the context of soul, immortality and rebirth. Okay, so वो उस पे आएंगे, because for him then, if it is in the transcendental world and if soul has all the ideas in its, he calls it pristine glorious form. He says पहले जमाने, like जैसे you know अनंत चतुष्टय of Jainism, that soul originally was in some Ananta Chatushtaya, like 4 happy things that he was enjoying, the soul. Later on got into the passion, similar context. So pristine glorious existence, sorry, not form, pristine glorious existence. Pristine मतलब word, you know, the pristine, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, you know, जैसे हम पुराने जमाने की चीजें करते हैं ना, कि एक जमाना हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां पे राजे महाराजे, मतलब एक तो प्रिस्टाइन एरा, सब बढ़िया था, सतयुग, बेस्ट वी, सतयुग, लाइक सब बढ़िया है, सब चंगा सी वाला मामला है। तो प्रिस्टाइन एंड ग्लोरियस, लाइक यू नो, लाइक सतयुग ओनली, एंड प्रिस्टाइन ग्लोरियस एग्जिस्टेंस मींस वी एक्चुअली सोल एग्जिस्टेड इन अ वेरी प्रिस्टाइन ग्लोरियस फॉर्म। उस समय all the ideas were there in the soul, and that was not, no need to even recollect. In pristine glorious existence, they are there only, you are nothing but that, those forms and ideas and universal, because you are what, you are the person who knows things, or you are the entity, a thing that knows things. That means knowing is not creating, knowing is not perceiving, so what is it? It is just retrieving, it's already there. So because it is not gathering, that is perception, it is not creating, that is churning, it is just recollecting, ये देखा, अरे ये था, खत्म। यस, क्रिएट कुछ नहीं कर रहे, नो कुछ शेप नहीं देना है, जस्ट रिकलेक्ट है, देयर इज नो क्रिएशन हैपनिंग, यू डोंट क्रिएट आइडियाज। यस, सो बट लेकर आ रहे हैं क्यों? इट इज जस्ट बिकॉज विदाउट दैट यू कैनॉट नो। No, 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 that is not, don't get confused with recollection. Means recollection of some kind of information in memory. What you're talking about is information in memory. मेमोरी में नहीं है वो आपके ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है, मींस आपके एक बेसिक कैरेक्टर में है ना। देखिए,
हर चीज का जवाब तो प्लेटो नहीं दे पाया, इसलिए तो लेटर फिलोसोफर्स आए हैं। इसका जवाब कांट ने सबसे बढ़िया दिया है कि ट्रांसेंडेंटल मतलब एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर। वो प्लेटो ने बाद में जवाब दिया हुआ है, सॉरी कांट ने, यस। हाँ हाँ, बट वही दे डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट बिकॉज सिमिलर है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, सिमिलैरिटी एंड ऑल, बट इट्स नॉट सिमिलैरिटी हियर। सिमिलैरिटी इज अबाउट मेमोरी, ये मेमोरी में नहीं है, ये आपके बेसिकली बेसिक थिंकिंग में है, ऐसे मान के चलो अभी के लिए, जो आप उसके बिना थिंक ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट यूर he uses this theory of recollection, but this recollection is not conscious recollection that what we do in memory. It's not memory recollection, it is transcendental. Like you see something, like calling something a thing. कैसे? How do you call something? अरे ये कोई चीज है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, कैसे? That what is the concept of thing? मतलब किसी का होना आपको कैसे नॉलेज होता है? लाइक कोई चीज है मीन्स व्हाट? इट्स नॉट दैट मेमोरी में कहीं नहीं थी पहले। लाइक कोई चीज आपने देखी तो मेमोरी में तो कहीं नहीं थी, होना आई एम नॉट सेइंग उसकी क्वालिटी सिमिलर। देखिए उसके जो एक्सीडेंटल क्वालिटीज हैं, यू नो एक्सीडेंटल एंड इसेंशियल, द टर्म इसेंशियल एंड एक्सीडेंटल मींस इसेंशियल क्वालिटीज मींस वो वैसी क्वालिटी जिसके बिना वो चीज चीज है ही नहीं। Accidental qualities means even if those qualities are there or not there, that as long as the essential qualities are there, वो चीज वैसे ही रहती है। जैसे कि शिमला मिर्च का पीला होना या लाल होना, वो कलर बस चेंज हो गया, तो द रेडनेस ऑफ द शिमला मिर्च इज इट्स एक्सीडेंटल क्वालिटी। वो चला भी जाए, कल को येलोनेस आ जाए, ग्रीननेस आ जाए, कोई इशू नहीं है तो वो शिमला मिर्च है। तो व्हाट मेक्स इट शिमला मिर्च इज नॉट रेडनेस, समथिंग एल्स, दैट इज यू नो उसको क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप्सिकमनेस। हाँ कैप्सिकम, बेल पेपर, तो कैप्सिकमनेस is what makes it capsicum. It might be red or green or yellow or so many other colors of purple and all, it's coming now. What he is trying to say is that redness is its accidental quality. Like आज है कल नहीं है, जा सकता है, लेकिन नहीं होगा। And that essential quality कोई एक, see how can, what would be that essential quality, what would be the answer, because then it's very difficult to answer, we already said that. So that's why he said capsicumness is its quality. So it has capsicumness and that's all. Whether it has redness, greenness, that's another story. So cow is cow not because it is cow, but because it has cowness. So as long as the entity, the thing has cowness, it is cow. If not, it is not cow. It might be red, blue, tomorrow you can paint it, still it is a cow. Paint cow, pink cow, you will just paint it with pink, it became pink cow, but it is cow. So what makes it cow? Now you may say, no sir, it's like this, if like normal mind of yours, so anybody's for that matter will say, nahi sir, wo to anybody having seeing and particular shape and particular thing, गिविंग मिल्क एंड थिंग्स लाइक दैट, तो काउ बोलेंगे। जो गोबर भी देते हैं सब, तो काउ बोलेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बुद्धिस्ट वे टॉकिंग अबाउट नॉमिनलिज्म। वो तो नाम दिया ना आपने काउ, तो ये तो झगड़ा है सामान्य का, तो सामान्य बस नाम है। तो दिस विल बी, दिस माइट साउंड वेरी अपीलिंग टू यू व्हाट बुद्धिस्ट वर सेइंग, लाइक सर काऊ को काऊ हम बोले रेडनेस, चलो कैप्सिकम की बात करें, रेडनेस हटा दिया, ग्रीन नेट पर कुछ तो है ना जिसको देख के हम कैप्सिकम बोलते हैं। तो वो चीजों का नाम ही है, बस थोड़ा सा शेप अलग कर दे, वो टमाटर जैसा दिखने लगा तो उसको कैप्सिकम थोड़ी बोलेंगे। लेकिन टमाटर के शेप का है, फिर भी वो कैप्सिकम हो सकता है। दूर से लगा कि ये टमाटर है, पास जाके देखा कि कैप्सिकम है। तो थोड़ा बहुत इट माइट हैव सम क्वालिटीज कॉमन विद टमाटर। नाउ हियर द कांसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी कम्स कि अरे वो टमाटर जैसे ही राउंड एंड लाल थोड़ा सा है, लेकिन पास जाके देखा अरे वो तो अलग शेप है, लेकिन है तो कैप्सिकम ही। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट इट्स कैप्सिकम? कैप्सिकमनेस है उसमें, एंड वो कैसे डिफाइन करेंगे उसको? ऐसे वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट एम्पिरिकल थिंग, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल थिंग। नो, ये हमारे इसेंस के अंदर है, यस, बट इन वेयर? सोल में।
So soul has all the ideas prior, sub ideas, all possibilities, even some things that you never know. हिग्स बोसॉन आज तक पता नहीं था, 2012 से पहले आपको पता नहीं था, फिर भी हिग्स बोसॉन की आइडिया आप में थी, बस वो बाहर नहीं आई थी. Revelation, perfect. No, exactly. That's why Plato also took in like his whole philosophy in that direction. Spirituality and everything he talked about. So now you might find it interesting. Now in India also it is said that if you meditate, you will actually have experience of even previous janmas and future janmas also. How? That is because if you can properly enter the transcendental world, all that was, is, and will be is in front of you. Now, again, similar to what Indian philosophy is. This is somewhere close to Aham Brahmasmi, that we can know everything from. Yes, you're right, absolutely. But Gayatri, you're right. Now, that's why I said very, very much similar. Now, but point is now, because they are intellectualizing more, so they stop. They are not they are not able to go beyond the way Vedantins have gone, Advaitins basically. Now, here, now he will also explain, by the way, he also has the concept something like Brahm. We'll talk about it. He also has the concept of called theory of ideas, idea of good. Okay, I'll come to it. But basically what he's talking about, there are ideas that are in transcendental world. Now that transcendental world is over and above. Now wording बहुत important है, don't use your word. Somewhere else नहीं, somewhere else बोल सकते हैं, लेकिन best word is over and above this world of object. There is transcendental world in which the ideas are existing, and that ideas are there in soul in its pristine glorious form. You know something means you recollect that idea, and you understand that this particular thing is to some extent or approximately participating in that idea. So why I mentioned circularity is, tell me, is this circle? Is this circle? Is this circle? You're right. Okay, if I make it like थोड़ा better और better हो गया, इसमें कुछ है क्या? फंक्शन ज्योमेट्री है ना, देखो. नाउ इस ये बताइए, नाउ व्हाट इज दी this example he himself also used, by the way. Okay, don't you think it's going closer and closer? How? That means no, इससे बढ़िया हो सकता है. क्यों? नो इससे ओके, इससे बढ़िया क्यों नहीं हो सकता? Yes, you're right. नाउ इसको और जूम करेंगे, दिख रहा है आपको राउंडनेस? प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है अभी, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा है. ओके, और जूम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये कैसे जाएगा यार? हाँ ओके, ऐसा है इसका, ठीक है. ओके, और जूम करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे ऐसे एजेस में दिखेगा उसके. और जूम करेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा. तो कैसे परफेक्ट सर्कल हो गया? I understood your point. So what you are actually saying is this circle is the closest possible to the idea of circle. Yes, so that's why, because the moment you draw a circle, it is not a perfect circle, because the moment you draw means it will have some thickness.
Ideally, a circle will have how much thickness? 0. ये तो you are getting the point. Circularity is an idea, and ideas are having no dimensions. Like I mentioned, the example of point. Is this a point, or this is a point, or this is a point, or this is a point? All are points. In that case, this also should be the point. But the point is this, because ideally point's dimension is 0. No length, no breadth, no height, nothing. Ideally. But to locate that point, you need some dimension. So every point is an approximation, or every geometrical figure drawn on the paper is an approximation. कितना भी perfect निकालो, as long as you have drawn it, it is not perfect. In the sense, not ideal. You understood the word ideal from now. Why we use adarsh, the term for ideal. Ideal is adarsh. Why? Because it's the perfect possible thing. Why? Because it is the closest possible to the perfection. Now, what is that perfection? Now, we improved it to this, to this, to this. Okay. उसके बाद improvement कैसे करेंगे? वो पेपर पर नहीं दिखा सकते. कहाँ दिखाएंगे? Transcendental world. That's why ideals cannot exist in world of objects. समझ में? Ideals exist in transcendental world. 99.9 पे जा सकते हैं. ये 90% है, ये 80% है, ये 60% सर्कल है. Okay, because now it's like this. So there is this perfect circle of which these are copies. Now this might be 99.9999% circle. 100% circle, transcendental world, the concept of circularity. The circularity or the circle proper is there in transcendental. Now, and why? You know this. You also know that this is not a perfect circle. काम के लिए perfect है. हमारे काम के लिए बहुत. Like वैसे तो, if I am talking about, like for example, I am drawing some diagram, okay, for some other purpose. I want to just show something like this. For all practical purposes, this is a line, perfect line for the work. ऐसे कुछ लिखना है मुझे, मान के चलो. I want to explain this. So for utility, yes, for that utility, this is circle, no? Is this circle? It's line. Is this circle? It's a square or rectangle. For all practical purposes, उसका काम चल जाता है. Now, if you want to actually study geometry की class में ये perfect होगा. लेकिन if you really want to do some very precise experiment in some lab where you are creating something, the circularity, piston and ये बना रहे, समझ लीजिए crankshaft है और उसका dimension इसका dimension exactly same होना चाहिए. In that what happens? Even this much precision is not enough. इसको zoom in करेंगे तो ऐसे ऐसे दिखता है ना, उसको भी वो ठीक करने की कोशिश की जाती है. You're getting the point. It's all about precision. No, because see, it's like this. वो इतना उसको क्लीन कर देते हैं कि इवन जूम इन करने के बाद भी आपको लाइन ठीक ही दिखेगी. वो तो इंस्ट्रूमेंट की बात होगी. Making it precise, yeah, nothing else. Point is, you can make things precise and precise, but you cannot have things in this world which are actually perfect. So perfection is not. Yes. So as long as anything in this, it is there in this world, it can be close to perfect, but not perfect. Because close to perfect is this world, but perfect is only in transcendental. Now you understand, however perfect you might be, however perfect your God might be, there is imperfection, but the moment you shift yourself to the transcendental world, everything is perfect. Because in transcendental world, your cowness is perfect.
Now, cowness is that pattern, that sacha, in which all the cows of the world participate. तो कोई काऊ का कान थोड़ा सा कटा हुआ है, तो वो कम, मतलब वहां पे उतना डायमेंशन चेंज है. पॉइंट इज अल्टीमेट जो साचा है वो तो एक ही है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर the conception of the Plato of the about the world is very static. What he says is that everything in the world is associated with the ideal in transcendental world, like a static things, catalog जैसे. ये है, ये इधर काउ है, उधर काउनेस है, इधर चेयर है, उधर चेयरनेस है, इधर कंप्यूटर है, उधर कंप्यूटरनेस है, इधर एप्पल है, उधर एप्पलनेस. तो ऐसे तो, बट एवरीथिंग इज स्टैटिक. इधर सर्कल है, उधर सर्कुलरिटी. बट इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट एंड चेंज एक्सप्लेन नहीं हो रहा है. यहाँ पे वाटर है, वहां पे वाटर की कंसेप्ट है, लाइक वाटर गंदा हो सकता है, सॉल्टी हो सकता है, वाटर तो वाटर है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर. सो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में हर चीज जो है बैठी है. नाउ व्हाट आर these are universals, बेसिकली क्लास कैरेक्टर्स है ये. यस और नो? नाउ हैव यू एवर सीन ब्यूटी? नहीं, ब्यूटीनेस भी नहीं देखी आपने. In the world, what you have seen is beautiful things. You have seen beautiful dog, beautiful flower, beautiful food, whatever, anything, beautiful house. But you have seen those things in something. You have not seen beauty, because beauty cannot be seen. Perception beauty की से beauty का perception नहीं हो सकता, उसका conception हो सकता है. So rather, in fact, because you have the conception of beauty, you can see beauty in the chair also, or flower also. हाँ. So see, you say that it's not. That's the criticism. Like somebody said, "Na beauty तो एक word है." You get some good feeling looking at something, some particular thing's physical appearance. So you say that okay, ये beautiful है. ये तो उसका criticism हो गया. But the point no, you need to understand one thing. Beauty lies somewhere else, not in the thing. The thing participates to some extent. कोई चीज टू सम एक्सटेंट ब्यूटीफुल हो सकती है, जैसे ना कम ब्यूटीफुल, ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसे भी होता है. व्हाई? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज देयर, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है, जिसमें ये ब्यूटीफुल चीज पार्टिसिपेट. सर्कुलरिटी का है वैसे ही है. सर्कुलरिटी का बेस्ट एग्जांपल. तो द थिंग्स इन द वर्ल्ड पार्टिसिपेट, or basically partake is the word. Taking part, partake is the word given by history. Then imitate, copy, okay, or approximate also you can use. So perceptible objects, that is here cow, imitate the real ideas. समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो वो परसेप्शन, बट वो नॉलेज नहीं है. नो, दे आर नॉट डिनाइंग दैट परसेप्शन होता है. परसेप्शन तो होता है, ऑब्जेक्ट का होता है. प्लेटो इज नॉट सेइंग परसेप्शन ही नहीं है, बट वो परसेप्शन नॉलेज नहीं है. What you perceive is object, but what you know is knowledge is of idea. That is, object is like, for example, chair, idea is chairness. Yes.
सी वर्ड तो आप कुछ भी देखो, सर्कुलरिटी इज द वर्ड यूज बाय इंग्लिश, हिंदी वाले अलग यूज वर्ड यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर्कल को? गोला, तो गोलत्व हो जाएगा। ओके, काऊ ने काऊ है, काउनेस है, अगर हिंदी में संस्कृत में बोलना है तो उसमें गौत्व हो जाएगा, अश्वत्व हो जाएगा, अश्वत्व मीन्स फॉरनेस। तो वर्ड्स आर जस्ट ग्रामर्स बट कॉन्सेप्ट सेम है ना। सी इफ आई से गौत्व एंड इफ आई से काउनेस, मुद्दा तो एक ही है ना, कंसेप्ट तो एक ही है। तो बेसिकली दैट्स हाउ वी आल्सो नो, इफ यू रिमेंबर, हम बोलते हैं ना कि अरे शब्द अलग है लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है, मींस व्हाट, वी आर ट्राइंग टू नो व्हाट। So point is, as the moment you know concept, you think that you are very clear that I know the thing. That's all. Words तो अलग अलग होते हैं, words का क्या है, वो concept पता है, no concept, words are symbol. So when, see, if I am talking to someone who understands Hindi, Marathi or Sanskrit, तो मैं जब गाय बोलूंगा तो उसको समझ में आएगा कि I am talking about this particular animal, blah blah blah. वही अगर अंग्रेज है तो उसको मैं गाय थोड़ी बोलूंगा, वो बोलेगा गाय मीन्स गाय कोई बंदा है, देयर गाय इज बंदा ना, गाइज एंड गर्ल्स वाला गाय, तो वो गाय को समझ लेगा और कुछ, तो वो उसको काऊ बोलना पड़ेगा। अगर लेकिन मैं काऊ बोलूंगा किसी हिंदी वाले को, वो समझेगा कौवा। तो वो तो वर्ड्स अलग, कॉन्सेप्ट समझ लो आप। यू कैन नेम इट रोज, नेम बाय एनी अदर नेम विल स्टिल स्मेल एज रोज। वो बहुत फेमस शेक्सपियर का डायलॉग है ये, अभी जो बोला मैंने, वो फेमस भी है फिलोसॉफी में, दैट रोज इवन इफ कॉल्ड बाय सम अदर नेम स्टिल स्मेल लाइक रोज। तो नाम उसको रोज रखो या कोई और रखो, हिंदी में रोज का मतलब डेली होता है, इंग्लिश में रोज का मतलब गुलाब होता है, तो वो तो वर्ड्स है। कॉन्सेप्ट पे बात करिए, वर्ड तो आते जाते रहते हैं। नाउ ऑब्वियसली दैट वर्ड इज दैट बाइंडिंग थिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू एग्री इन दैट लैंग्वेज, बट इट इज जस्ट पैकिंग। जैसे कोई एक पैक है, उसके ऊपर लिखा है भाई रेनॉल्ड पेन, तो ये जो रेनॉल्ड पेन स्टिकर है उसको हटा भी दे तो भी अंदर रेनॉल्ड पेन ही रहेंगे ना, या नटराज की पेंसिल रहेंगी फॉर एग्जांपल। तो लेबल इज नॉट थिंग, बट ऑब्वियसली लेबल हेल्प्स अस आइडेंटिफाई थिंग। आसान काम कर देता है भाई, नाम ही लिखा है तो अच्छा है, हाँ चलो इसमें है। ये एग्जैक्टली, नाउ आई विल कम टू दैट। सो देयर इज दिस कॉल्ड स्टोरी और myth or analogy or whatever you want to call it, it's very famous, it's called allegory of cave। allegory मतलब story, basically analogy type। cave that is गुफा, तो ये प्लेटो ने ही दिया है। he explains things from the point of view। तो बोलता है मान के चलो कि ये ऐसी एक गुफा है, ठीक, ओके। गुफा में यहाँ पे एक पत्थर है, वॉल, यहाँ पे आप लोग हों बहुत सारे, जिसके हाथ पैर बंधे हुए जिंदगी भर से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं थोड़ा, ओके। यहाँ पे कुछ चीजें, हिलने वाली चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, बस चीजें हैं कुछ, और यहाँ पे क्या है, एक आग लगी हुई, लाइट है, ठीक है। तो इसकी शैडो इधर आती है, राइट, और जैसे ये हिलेगा शैडो हिलेगी, ये हिलेगा शैडो हिलेगी, और ये इधर मुंह करके बैठे हुए बचपन से हाथ पैर बंधे हुए, तो इनके लिए ये शैडो ही दुनिया है।
like that it is. Now, very similar to myth, Maya. But he says that's how, it's just an allegory. It's not exactly, it's just a story to explain things. It's not real. ऐसे नहीं कि हम सच में कुछ गुफा में हैं. It is conceptually. So he then explains somebody like Socrates somehow frees himself and sees things. Oh, ये तो सब फालतू अरेंजमेंट था, ये तो कुछ था ही नहीं ट्रू. रियल वर्ल्ड तो बाहर है, जहां पे यू नो सन है, क्लियर लाइट है, चीजें हैं, एंड देन ही कैन सी थिंग्स as it is. Okay, he thinks that Socrates, but somebody who is enlightened like that, to see things as it is and see things in a very different way. Just to explain that, छोटे सिंपल लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए उसने स्टोरी, ये इसका सवाल भी आता है. ओके, सो पॉइंट इज दिस शैडो इज जस्ट वॉट एवर इज हियर, उसका शैडो मतलब उसके जैसा ही होगा. So shadow is not real. This is real. Because shadow is dependent on this. Some आकृतियां something which ऐसे हिल रही हैं तो उसके हिसाब से shadow ही हो रही है. So shadow is what? Dependent on this thing. But this is independent अपने आप में. Yes or no? And in this context, this is substance. Substance का मतलब होता है in itself and for itself, not dependent on anything or any other thing for its existence. यहाँ पे substance का ये मतलब है. He clarifies that. समझ में आया? यहाँ पे कुछ डाउट है? अपने लिए बस, अपने आप में, किसी और पे डिपेंड नहीं है. तो शुरू वहीं से एंड वहीं पे, वो किसी के लिए नहीं है. इट्स नॉट फॉर सम पर्पस, अपने आप में बस सब्सटेंस है, दैट्स ऑल. जैसे सोक्रेटिस है, बुद्धा है, वो सोक्रेटिस का एग्जांपल दिया, बट उसको पता नहीं था सोक्रेटिस तो कुछ भी नहीं है ना. यहाँ पे एक्चुअली बुद्धा है जिसने उसके बाद जिंदगी ऐसी जी जैसे चीजें नहीं में पता हो, यू नो. And there are some Rishi Munis so it claim that they know past, present and future. To some extent they can tell your past, present and future. इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र फिर बाद में डेवलप हुआ इंडिया में. उस पर भी बहुत रिसर्च हो रहा है आजकल की वो सच में फेक है, सुडो साइंस है, उसमें कुछ भी प्रेडिक्टेबिलिटी है, लाइक 100% नहीं लेकिन सम प्रेडिक्टेबिलिटीज है. एनीवे वो तो अलग बात होगी. ओके, सो हियर you need to understand one thing. Now the whole Plato thing, you understood this? ये story है, इसको ऐसे ही लिखनी है अगर वो पूछे भी, लेकिन उसमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है वो. You need to understand one thing. The cave is the whole world. The shadow is the objects of the world. This thing is the substance or entities on which shadows are dependent. Okay, and somebody who is freeing is somebody like Socrates, and people actually killed him. So sense and thought or intellect, ये इसका clear cut dichotomy you can see now in Plato's thinking. What you sense is different, what you think is different. Perception अलग है, conception अलग है. So universals and particulars or perceptibles, he does not use word particular, he used perceptible. So something that be perceptible world is also another word he used. Perceptibles. Yes. No, perceptible means something that can be perceived. Knowable is something that can be known. So this chair is perceptible, but chairness is not perceptible. It is universal versus universal.
राइट? तो सर्कल एंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, राइट, हमने अभी बात किया वही चीज। रिकलेक्शन यू अंडरस्टूड, देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड रेमिनिसेंस, वर्ड है वही, रेमिनिसेंस भी वही होता है। रेमिनिसेंस मतलब इस लाइक कॉन्शियस, सेंस मतलब नो, अरे टू नो, टू अंडरस्टैंड। रेमिनिसेंस मतलब रेमिनेंट, पुरानी चीज समझ में आना। तो थियरी ऑफ रेमिनिसेंस, थियरी ऑफ रिकलेक्शन एक ही चीज है, ठीक है? समझ में आया कहां से आ रहे हैं? प्रिस्टाइन ग्लोरियस एग्जिस्टेंस में सोल हैड ऑल दी आइडियाज, यस। ज्यादा फर्क नहीं, सी कॉन्शियंस वो अपना मोरालिटी से आया हुआ कंसेप्ट, जमीर, कॉन्शियंस, एंड कॉन्शियस इज सेंस, जिसका सेंस है वो कॉन्शियस है। कॉन्शियंस वही, वो मॉरल कंटेक्स्ट में, इनर वॉइस, मॉरल ही है वो, बस सही गलत बताने वाला कॉन्शियंस, कंसाइंस जिसका स्पेलिंग है, बट बोलते हैं कॉन्शियंस। वो अंदर की आवाज, मतलब मेरा जमीर जो आपको अंदर से बोलता है, वो एथिकल बाद में डेवलप हुई कंसेप्ट है। कॉन्शियसनेस अपना इस सेंस वाला, चेतना, ठीक है? बिल्कुल अलग है दोनों। नहीं, कॉन्शियस ये GS4 में यूज करना है, दैट्स ऑल। दिस वर्ड नेवर टू बी यूज्ड इन फिलोसॉफी ऑप्शन, ये पूरा GS4 का है, कॉन्शियंस, एंड व्हाट वी यूज इज कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियस वाला है, चेतना, जीवित रहना, बेसिकली कुछ चेतना होना, उसका मोरालिटी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, उन्होंने क्या किया है, somebody like somebody who having better information, better awareness of his or her own चेतना is more likely to be more moral, ऐसे माना जाता है कि भाई जो स्पिरिचुअली आगे गया है वो मॉरल है, इसलिए वो शब्द यहां से निकला होगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉपर लिंग्विस्टिक प्रूफ फॉर दैट, बट लग रहा है भाई सिमिलर टाइप्स का है। बट कॉन्साइंस मतलब सही गलत की जानकारी जो आपको देता है, वो उसको बोलते हैं कॉन्शियस। यस, होता ही है, यस, मोर लाइकली। सो उससे लिए वर्ड निकला होगा, लाइक पहले के जमाने में ऐसा होता होगा कि जो कॉन्शियसनेस की बात करता है वही कॉन्शियस की बात करता है, ऐसे होता होगा, तो इसलिए वर्ड। और somebody होता है ना कि somebody who derive, like for example we talked about idea and now we know the word ideal, but ideal तो normally भी यूज होता है, but idea ये जो प्लेटो का वर्ड है, that is very philosophical concept, what we have been discussing for last 1.5 hour, just trying to understand what he means by idea, but ideal तो हमें पता है, हाँ वो एकदम ideal है, मतलब perfection like that, so it's words का issue है। but conscience spelling में भी देखना, consciousness मतलब conscious होना, ness है ना, स्व, चेतना, ओके। इनफैक्ट दिस वर्ड चित से चेतना आया है, ओके, मतलब कनेक्टेड है, संस्कृत में तो हर शब्द का एक बेस रूट होता है, ठीक है? समझ में आया? तो नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो परसेप्टिबल, सेंसिबल, नाउ हियर द वर्ड सेंसिबल मींस जो हम नॉर्मली सेंसिबल बोलते हैं वो नहीं है, अरे थोड़ा सेंसिबल बिहेव करो, वो वाला सेंसिबल नहीं है। जो सेंस कर सकते हैं वो सेंसिबल, जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एनी सेंस ऑर्गन कैन डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इज सेंसिबल। समझ में आ रहा है? जो अपने सेंस ऑर्गन के दायरे में आते हैं वो सेंसिबल है, राइट? सेंस है, सेंसिबल है, समझ में आ रहा है? परसेप्शन है, परसेप्टिबल है, एंड सेंसिबल चीज है तो थिंकिंग भी है, वर्सेस है एक दूसरे के, वो डाइकोटमी है, ओके। So he says ideas can be thought but not sensed. So you cannot drink rice,
You can drink water, eat rice. So ideas can only be thought, it cannot be sensed. So ideas can thought but not be sensed, and objects can be sensed, not thought. समझ में आया? So idea and object dichotomy है. So what you sense is object or basically perceptibles. ये एग्जैक्टली बाद में कांट भी बोलता है, समझ में आ जाएगा. ओके, अनदर कॉन्सेप्ट ही टॉक्ड अबाउट कि हर चीज चेंज होती है दुनिया में. ये चेयर है, कल जैसे थी आज ऐसे नहीं होगी, अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा. आज जो फूड है कल खाएंगे तो मर जाएंगे, आज खाएंगे तो नरिश करेगा. सो थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग, एग्जैक्टली लाइक क्षणिकवाद. ठीक, बट इन द वर्ल्ड things keeps changing. In the empirical world, things keeps changing. In the world of object, things keep changing. So ये क्षणिकवाद तो हो गया, बट देन क्षणिकवाद का जो क्रिटिसिज्म है, भाई चेंजिंग है तो किस बेसिस पे चेंज हो रहा है? You're getting the point. Like if something is changing, that must be some reference point who did not change. ये तो लॉजिकल है ना, तो बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट ये है. So there is something which remains unchanged, in the backdrop of which we can see things change. So this chair is different, this chair is different, this chair is different, but why they are changing? Different chair 1, chair 2, chair 3, chair 4, because there is only one chairness. So chairness, how many chairness in the world? Only one. Yes. So transcendental world, things do not change. So idea do not change. World of objects change. समझ में आ रहा है? तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिकमिंग है, कंटिन्यूस, लाइक क्षणिकवाद. एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज क्या है? बीइंग है. You understood being, right? Now you're understanding how he is talking about. Very similar again. Only difference is Shankaracharya will combine all into idea, or not idea, Brahm. Now here they are still in the intellectual thing, idea of thing, idea of this, idea of that. Now this chairness, circularity, appleness is an idea, so they are still intellectual. Brahm is not idea, Brahm is existence and experience. So ये थोड़ा फर्क हो जाता है. बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन चेयर तो है वो. क्लास कैरेक्टर, यूनिकनेस मींस व्हाट? क्लास कैरेक्टर. कि इसमें यूनिक क्या है कि सब चेयर है. ओके, नो नो नो, यू आर राइट, यू आर सेइंग यूनिकनेस इन दैट पर्टिकुलर थिंग. यस, तो वो यूनिकनेस नहीं है, वो है यूनिकनेस. बाकी जगह पे हम उसको यूनिकनेस बोलते, पर्टिकुलरिटी. ही डजंट टॉक अबाउट पर्टिकुलरिटी एज समथिंग, ही जस्ट सेज दैट पर्टिकुलरिटी करके कुछ होता नहीं है. वो चेयर ना थोड़ा सा मिस कर गई परफेक्ट चेयर से. So it's a lack of perfection, not particularity. Aristotle will come and say that no, particularity भी अपने आप में एक चीज है. अपने आप में एक चीज होना मतलब सब्सटेंस होना. So that is because world of object is always a becoming thing. Something keeps on becoming, like you cannot bathe in the same river. प्लेटो का ही स्टेटमेंट है, आया तो जो इससे बुद्धा ने भी बोला है उसी समय. मीन्स व्हाट? पानी उसका चेंज होता रहता है ना एवरी मोमेंट, बट फिर कैसे बोलते उसको रिवर? कुछ तो सेम रहता है ना. उसका जो गंगानेस है, यमुनानेस है, वो तो सेम है. इसलिए हम बोलते हैं नदी तो एक ही है, पानी चेंज हो कंसेप्शन में. सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष.
नहीं, ज्ञान लक्षण का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। वो सी ज्ञान लक्षण इज ऑल अबाउट मेमोरी, एक तरीके से मेमोरी, मतलब नॉट वैसे मेमोरी, बट दैट इज अबाउट टू क्वालिटीज बीइंग टुगेदर। यहाँ पे सब्सटेंस कुछ नहीं है। यू डोंट नो सब्सटेंस टू ज्ञान लक्षण, यू जस्ट एसोसिएटेड वन क्वालिटी विद द अदर। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण इज लाइक यू नो काउंट स्ट्रेट अवे, ओके, बट वो ये नहीं बोल पाया, वो तो न्याय ने बोला। He was not able to explain as to what is that faculty through which we know ideas. He says that we don't know ideas, we recollect ideas. So because वो है, but न्याय बोला नहीं, we know it is through, like वो न्याय का ज्यादा लॉजिकल लगता है कि हम चीजों को परसीव करते हैं डायरेक्टली, बट वो परसेप्शन डायरेक्ट परसेप्शन है, बट परसेप्शन इज नॉट अबाउट क्वालिटीज. It is very similar to now, pretty similar to what Locke will say. How do we know substance? वो आएगा, वो डायरेक्ट परसेप्शन से आता है. गायत्री ने क्या पूछा है? Sir, here if question comes on substance, what exactly should we write? No, substance. देखो, Plato has not talked much about substance as such. He says ideas are substance, ideas are real, ideas are eternal, ideas are patterns, ideas are perfect, ideas are eternal, and things like that. No, idea is everything. Okay. So he is not explaining. If they are asking, they generally won't ask the concept of substance from Plato's point of view. They will ask substance from Aristotle's point of view, because Aristotle explained the substance in a better, thorough way. And later philosophers, obviously, they talked about substance in a different way. So here he just explains concept of substance. He takes help of concept of substance, of whatever concept it was there. Substance means in itself, for itself, वो जो सब accepted है. See, it's a philosophical concept. Substance. See, the problem with the Western philosophy is उसको explain भी करना intellectually है और उसका ultimate thinking भी intellectual है. तो ऐसा लगता है कि घुमा रहे हैं. इंडियन फिलोसफी में क्या है, इंटेलेक्चुअल से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो वहां कहीं ले जाते हैं जिसको आप अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रह्म ऐसा है वैसा है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं, सिर्फ इंटेलेक्ट है, तो वो ऐसा लगता है कि पूरा हो गया, लेकिन कुछ है नहीं. अल्टीमेटली दे विल टॉक अबाउट परफेक्शन, सब्सटेंस, क्वालिटीज, आइडियाज, इटर्नल, नॉन इटर्नल, बीइंग, बिकमिंग, लाइक दैट. बट यू अंडरस्टूड व्हाई दिस इज बिकमिंग एंड दिस इज बीइंग. So obviously, if cow is changing every day, but cowness is remaining, which is there in this cow. By the way, cowness is there in this cow because, in the sense, cow is participating in the cowness. ठीक है? Okay, and recollection theory, वो soul immortal है वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको करेंगे हम बात. Theory of ideas, right? Ideas are patterns, समझ में आ गया. And things, objects simply imitate them. Ideas are original, others are copy. Sensible, perceptible things participate in ideas. Things reminds us of ideas. Recognition वाला concept जो आपने बोला, by the being similar or dissimilar to the ideas. Ideas being things are becoming. Ideas are transcendental. Ideas are real, distinct, separate. Ideas are substance that is in itself, for itself, and does not require existence of anything else for it. समझ में आएगा? Ideas are universal, that is cowness, beauty, class, character, common thing. Like there is some common. Now, see, you need to understand. If he is talking about ideas, everything, then he need to explain what are ideas. Ideas को ढंग से establish करो. No, नहीं, ऐसा नहीं. सब कुछ आइडिया नहीं बोला है उसने. मैंने भी नहीं बोला है. No, idea is everything, not like Brahm is everything. वैसा वाला नहीं है ये. Don't get confused. I was saying idea, see, ultimately idea ही है. वो तो चीजें हैं. कॉपी है, करेक्ट. बट आइडिया एक नहीं है ना.
चेयरनेस अलग है, काउनेस अलग है। आइडियाज की कॉपी है, रिस्पेक्टिव आइडियाज की कॉपी है। काउनेस की कॉपी है, चेयरनेस की नहीं। तो बट चेयरनेस और काउनेस अपने आप में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उधर। ब्रह्म का कंटेक्स्ट अलग हो जाता है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, वो अलग है। यस, आइडिया नहीं थी वो रियलिटी है वो, क्योंकि वो कंसेप्चुअली नहीं जा रहा है, वो एक्सपीरियंशियली जा रहा है। सिमिलर आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या, यहाँ पे इट्स वेरी वेरी इंटेलेक्चुअली डोमिनेटेड, दैट्स व्हाई इट फील्स दैट ये यही है बस। हाँ, यस, इट इज ड्यूअलिज्म, इट इज कॉल्ड प्लेटोनिक ड्यूअलिज्म, दैट इज ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, उस कंटेक्स्ट में इसको ड्यूअलिज्म बोलते हैं। इसको ये इस वर्ल्ड को वो अनरियल नहीं बोलता, ये वर्ल्ड उस आइडिया को कॉपी करते करते मतलब है ना। जगत क्या बोलता है, वो है ही नहीं, सॉरी, जगत है ही नहीं, ऐसे अद्वैतिंस क्या बोलेंगे, जगत तो है ही नहीं, कि दे विल से नो, जगत है नहीं की बात ही नहीं करता। चेयर पार्टिसिपेट्स इन चेयरनेस, मींस चेयरनेस भी है, चेयर भी है। यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लाइक जो ये सर्कल भी है, ये सर्कल भी है, ये सर्कल भी है, ये सर्कल भी है, दे आर गोइंग क्लोजर टू द परफेक्शन, बट अनपरफेक्शन भी है। बट परफेक्शन इस वर्ल्ड में नहीं हो सकता, वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। परफेक्ट सर्कल आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज यू आर ड्रॉइंग इट इज परफेक्ट इम्परफेक्ट। एंड if you want to be perfect, then the circle should be in transcendental, no dimension, but transcendental world. Okay, as long as it has dimension, it is imperfect. Ideas, each idea is unique. Now that's why I said uniqueness in the context of idea. Cowness is unique in itself, appleness is unique. Each idea means there are how many ideas, many ideas. Ideas change हो सकता है क्या? Obviously idea cannot change. What change is chair, individual chair, other chair, yesterday chair, today chair, this can change, chairness cannot change, simple है। वो तो चेंज होता ही है, फिजिकल चीज कोई भी चेंज होती है, वो तो साइंस, वो तो आपको भी पता है। आप जो कल थे आज नहीं है, 2-3 हजार सेल मर गए हैं कल बॉडी के अंदर, नए बन भी गए हैं, तो चेंज तो हो गया ना। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन चीज है। हाँ हाँ, तो वो तो फिजिकली स्पीकिंग नथिंग इज परमानेंट एज इट इज एग्जैक्टली, यूटिलिटी के लिए परमानेंट है। कल को क्या हो गया, वो चेंज होते 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 ऐसा हो जाएगा कि ये टूट ही गई, हमें लगता है कल टूटी, नो, टूटने का उसका जो प्रोसेस है वो पहले से ही शुरू है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई एक ह्यूमन बीइंग भी मरता है तो वो उस दिन नहीं मरता, वो तो मरने का प्रोसेस, ये तो हमें आज भी पता है ना, कि जैसे बीमारी का तो हमें पता है, लाइक फॉर एग्जांपल समबडी गॉट कैंसर 3 इयर्स बैक, तो हमें ये पता है कि जब से हमें डिटेक्ट हुआ कैंसर 3 साल से तो मर ही रहा है, धीरे धीरे कैंसर की डेथ के क्लोज जा रहा है। बट डेथ करके कुछ होता नहीं है, वो तो पहले जब से आप जन्म लिए तब से मर ही रहे हैं ना एक तरीके से। समझ में आ रहा है? एक कंसेप्ट है दैट एवरी डे, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स सिंपल, you every day you live, every day, every 1 day that you live or 1 hour that you live, you are 1 hour closer to the grave. उसमें कोई डाउट है? So why? Because everything is changing in you. हम बोलते हैं ना कि I am 30 years old means what? वो बच्चे वो तो थिंकिंग में है, आपको क्या पता है कितने बच्चे हैं, वो तो थिंकिंग में है। वो तो प्रैक्टिकली ठीक है, हम समझते हैं कि ऑन एन एवरेज और 50 साल बच्चे हैं, 80 तक ठीक है, 90 तक, 100 तक जो भी है, 100 इज लाइक आइडियल, 100 से ज्यादा मतलब, और वो भी वो अलग बात हो गई, वो तो प्रैक्टिकल हो गया कि कितना पेन है, कितना सफरिंग है, किस टाइप की लाइफ है, मेंटल प्रेशर सफरिंग है, सब लोग मर गए घर में, मैं अकेला ही जी रहा हूँ पिछले 20 साल से, 100 के ऊपर चला गया, फिर भी घर वाले मर गए, मेरे पोते भी मर गए, मान के चला ऐसे, अब फिर भी मैं जीवित हूँ, क्यों? पता नहीं क्यों, तो वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो तो प्रैक्टिकल चीजें होगी। बट एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज स्टैग्नेंट। माइन्यूट लेवल पे अगर जाएंगे तो चेंज तो हो ही रहा है, उस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हर चीज चेंज हो रही है। तो बट चेंज क्या नहीं हो रही फिर भी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ एवरीथिंग इज चेंजिंग, स्टिल
why are you still calling things with the same name and same concept for that matter? It's not just same name, your behavior towards that thing also remains the same, because it has chairness, and to the extent of utility also it has chairness, and otherwise also it has chairness. So to explain everything is changing, ये क्षणिकवाद का जवाब इन्होंने अच्छा दिया है एक तरीके से, that क्षणिकवाद could not answer, like if हर चीज चेंज हो रही है तो किस बैकग्राउंड पे चेंज हो रही है? So that means there is something which is not changing in the same backdrop, it is changing. जो मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था, एक हरा एप्पल लिया, 5 दिन बाद वो रेड हो गया और 5 दिन बाद वो खराब हो गया, एप्पल वही था, क्वालिटी उसकी चेंज हो गई। तो दिस कॉन्सेप्ट आइडिया ऑफ एप्पल इज सेम, हम नहीं बोलेंगे कि ये कोई दूसरा एप्पल है, तीसरा एप्पल है, वो वही एप्पल है, खराब हो गया, ठीक है। So without the concept of apple you cannot explain change in apple. Okay, ideas are essence of things, ideas are causes, unmoved and moving. So idea is the cause of everything. Now is this causal relation is also like Vivartavad. There also Brahm is the cause of the world in a different way, right? Now appearance नहीं है, नहीं, obviously at all, no, not at all. परिणाम भी नहीं है, ये पार्टिसिपेशन है, ये कॉपी है बस, और ये कॉपी है दूसरे के इसमें, ठीक है। नाउ बट यू हैव सम डाउट? हाँ, हाँ, your concept of I is also transcendental in that way. But then Indian context में, see, इसमें क्या है, वर्ल्ड एक्सप्लेन किया है बेसिकली, उसमें I भी आ जाता है, because anything that you can perceive, but I अपने आप में परसेप्शन नहीं है, वो उसका कंसेप्शन ही, there is no I outside. Can you see I or anything that participates in I? Okay, body for that matter, तो बॉडी को बोलते हैं हम I. Body that you can perceive, no, my hand. So body is the participation in my concept, but उस context में उसने बोला नहीं है, उसने soul के बारे में बात की है. Obviously, then what is soul? Soul is exactly like how world and how chair and chairness is there. In the same way, your human body and everything, your experience and soul is there. Soul is eternal. Now he talks about immortality of the soul. Now makes logical. सेंस लॉजिकल की सोल है फिर, एंड बिकॉज ये आइडियाज फिर किसमें है, बिकॉज ही हैड टू अगेन एक्सप्लेन, फिर आइडियाज है कहां पे, वो आइडियाज कहीं और दूसरी जगह पे नहीं है, उस सोल के अंदर है, एंड सोल का रिबॉर्न भी होता है, बिकॉज अनलेस यू रिबॉर्न तो सोल कंटिन्यूज, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है, बॉडी चली जाती है, बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, सोल चेंज नहीं होता। तो ये आई है एक्चुअली, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज सोल. So your concept of I is basically soul. That's how we also see it, right? Self. So self means, according to Kant, according to Plato, it is soul. So say soul does not change. Soul can see body changing. Okay, aham, maybe your mood can be changed, state of mind changes, but soul remains because soul observes everything. उस कंटेक्स्ट में अगर ऐसे उसने बात नहीं की है, बट ओवरऑल उसका कंटेक्स्ट यही है, उसने ज्यादा हमारे इसमें भी जो बोला है, सोल इमॉर्टल है, मरता नहीं है, सोल ट्रांसमाइग्रेट होता है फ्रॉम दिस बॉडी टू दैट बॉडी, सोल ही लेके आगे जाता है, सोल के पास ही वो सब आइडियाज हैं ट्रांसेंडेंटल रूप में, प्रिस्टाइन ग्लोरियस एग्जिस्टेंस में जो थे तभी कंटिन्यू है. सी, it's not that today's soul is not pristine glorious existence, no, it is there, but we are not able to recollect it. वो डॉर्मेंट फेज में है, तो उसके लिए वो बोलता है ना कि वो मेडिटेशन करो. इनफैक्ट उसकी किताबों का नाम भी आई थिंक मेडिटेशन 1, मेडिटेशन 2, ठीक है. नाउ तो आइडियाज समझ में आ गया. नाउ इसमें भी एक चीज और ऐड करता है, ऑल द आइडियाज. नाउ पीपल आस्क हिम, ओके, काउनेस, हॉर्सनेस, मैननेस, मैनहुड, वुमननेस, वुमनहुड, रोजनेस, ब्यूटी, स्वीटनेस, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं क्या डिस्क्रीटली, मतलब फैले हुए, इधर एक पड़ा है उधर एक पड़ा है, उसमें कुछ अरेंजमेंट है या नहीं है?
So he says yes, there is arrangement. So ideas are hierarchy ordered, arranged in hierarchy. So ideas are hierarchical. कैसे? How ideas are hierarchical? Means what? No, hierarchical means कोई चीज लोअर है, कोई चीज हायर है. ठीक है, तो वो जैसे उदाहरण के तौर, okay, now don't go with the name, I am talking about this Gayatri, sorry, this Anjali, this Gayatri, this Shibani, ठीक है, this Yash, Siddharth. Now these are also ideas in itself. वो पर्टिकुलर्स हैं, लेकिन जितना ज्यादा पर्टिकुलर, जितना ज्यादा लेस इंक्लूसिव, उतना ज्यादा लोअर आइडिया. मैं बताऊंगा कैसे. जैसे ये दोनों मैन है, राइट, ये 3 वुमन है. सो आइडिया ऑफ वुमन is higher than idea of Anjali. Idea of man is higher than idea of Siddharth. Then what happens? Very good. So idea of human is higher than idea of woman. Higher. Now in what context higher? Higher as in uska inclusivity. Because it includes many other ideas, no? That's why higher. Okay, more refinement and more inclusivity. Then ideas are human, then ideas of animal, right? Okay, like that करके the top is idea of being. Yes, भव जैसा जैसा भव था. यस, बट वो हाईएस्ट नहीं है. ओके, कहाँ पे? नो नो, वहां पे तो वो था, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. बीइंग तो वैसे इंटेलेक्चुअली वो हाईएस्ट है, समझ लो. बीइंग के ऊपर और क्या होगा? टू बी. बट प्लेटो क्या करता है, उसको थोड़ा सा टर्न ट्विस्ट दे देता है. उधर मतलब कहाँ बताइए, कौन से थिंकर, कौन सा फिलोसोफर था ये? याद करिए. वैशेषिक में था, क्या था एग्जैक्टली? एनीवे, हाँ, मतलब वहां पे क्या था, बीइंग. वो जैनिज्म में भी था, सब्सटेंस, द्रव्य, एनिमेट, इनएनिमेट, लाइक दैट, वो भी था, क्लासिफिकेशन था. ये बीइंग का आइडिया फिर बाद में इसमें भी आता है और पदार्थ में भी आता है. पदार्थ मींस बीइंग, नॉन बीइंग. सो वो कैटेगरीज ऑफ नोएबल्स था. ठीक है, ये कैटेगराइजेशन ऑफ आइडियाज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स. नाउ सिमिलरिटी है उसमें, बट उसमें क्या बोलते हैं वो? नाउ हियर इज द इंपैक्ट ऑफ Socrates on him. So he takes things morally. Now, moral, good behavior kind of knowledge is virtue. So he says, higher the idea you have,
more and more knowledgeable you are. Simple, ये तो है. Like you know, you have higher and higher ideas, means you have higher and higher knowledge, but higher knowledge should come with higher morality. अब वो अरिस्टोटल ने आके क्रिटिसाइज किया, तब तक वो बोल रहा था कि वो सब बढ़िया है. So he says all the ideas converge to, in the end, the idea of good. Idea of good से ज्यादा कोई आइडिया बड़ा नहीं. This is a moral concept. So somebody who can recollect by his own efforts, whatever, who can recollect the idea of good is the highest knowledge. Morality को, you know, he tries to bring in morality into it. समझ में आ रहा है? And this idea of good is like this, all the ideas, all inclusive. So this idea of good is nothing but God. So that way he is theist. But you need to understand what he is trying to do. He is trying to kind of explain, you know, he is trying to establish the concept of God. अभी कभी-कभी होता है ना कि वो, because if you remain intellectual, suddenly to establish God becomes very difficult. तो ऐसे थोड़ा jump जैसा लगता है ये. Suddenly he is bringing in morality and then establishing concept of God, but that's how he does it. So obviously later on that's why criticism आता. So basically idea of good is God. Now God means that, no, you know, is in transcendental world the highest thing is God. So tell me, as far as the knowing is concerned, which idea is the most worth of knowing? That is God. So idea of good is God. So knowing God is the ultimate aim. Again, थोड़ा religious type हो गया, या हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष types हो गया. Now here you can also equate idea of this God is like Brahm. So now if you see what you are asking, ये arrange करके all ideas are there. They are not Brahm, but all ideas converge to idea of good or God. Now you can say, okay, he has brought in something like Brahm here. He has not removed everything, but he says everything converts. So ultimate knowledge is Brahm only. एक तरीके से ultimate knowledge is the idea of good or knowledge of God. So how do you know knowledge of God? Oh, okay. How do you have knowledge of God? To have idea of good, because goodness is what God has. उस जमाने का God उनका God is all good. So goodness, God को जानना है मतलब goodness को जानना है. So that's how he bring in religiosity एक तरीके से, and immortality soul को तो समझ में आ गया, because unless soul is immortal, how can recollection happen? How can pristine glorious existence explained? Where is the ideas? Then soul में है तो soul है, तो soul continue होता है. And another thing is, human beings, all other aspects except soul changing. So something should be there which is not changing, that is soul. Something that is essence of human being is soul. Now he is coming to Atma and everything. So soul is also explained, immortality of the soul is also explained through what? Change and stability. So he is focusing very much on something which is, everything is changing, agreed, but that means there is something which is not changing. So idea of good and immortality of the soul, ये उसके एक तरीके से पेपर सेकंड के लिए ज्यादा काम की चीजें हैं. प्लेटो के थॉट्स फॉर दी हिज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. आते हैं सवाल पेपर 2 में, एग्जैक्टली यही सवाल आया है कि एक्सप्लेन करो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. बाय द वे पेपर 2 में फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में आए हैं ना, ईश्वर, रामानुज, शंकराचार्य, दोनों आए हैं. 2 अलग अलग क्वेश्चन आए हैं जो हमने पेपर 1 में पढ़े हैं, वही लिखना है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है वो पेपर 2 में.
इंटीग्रल योगा का क्वेश्चन है. So that's why paper 2 इसलिए ज्यादा. So the only thing is you need to focus on different way of writing there and different way of writing here. There it is issue who is important. That is, you're talking about soul or anything. So whichever thinker has some relevance there, you write. Here in paper 1, specific thinker is always asked. General पूछते नहीं है. एक particular integral yoga की concept of Aurobindo only you have to talk about. So that's why how it is. That's what how it is. So okay. And when you contemplate upon idea of good, that is God, that is Brahma, then you can recollect all, or you can experience, or you can go back to pristine glorious existence. सेम है, मतलब बेसिकली क्या होगा, निर्वाण प्राप्ति होगी, बट नॉट एक्सप्लेन्ड इन अ प्रॉपर वे, बट ऑन द सेम लाइन. समझ में आ रहा है? So the question might be asked about idea of good and the concept of maybe Brahm or Nirvana in Indian context, or any spiritual attainment concept in Indian way is very similar to that concept. That's how also they can ask. Now, soul क्यों? जैसे मैंने बोला, only entity moves by itself and moves all other things. So as I said, body भी move कौन करता है, mood भी कौन perceive करता है, हर चीज. Basically, everything who is a mover, doer is a soul. Body is not doer. Body किसी की बात सुन के वो काम करता है, तो ultimately soul is there. Secondary हो गया body. Everything is changing, everything is perishing, means there is something which is not perishing, eternal soul है. ठीक. रिकलेक्शन सोल से ही होगा, वो पता है. ट्रांसमाइग्रेशन भी सोल, तो सोल है भी, ट्रांसमाइग्रेशन भी है, वो एक दूसरे के सपोर्टिंग पॉइंट्स है. तो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन ट्रांसमाइग्रेशन, यू टेक हेल्प ऑफ सोल. अगर सोल है तो वो ट्रांसमाइग्रेशन ही होना चाहिए. अदरवाइज इफ सोल इज समथिंग दैट डाइज विद बॉडी, देन हाउ इट कैन बी सोल? देन इट्स बॉडी ओनली. इफ यू रियली वांट टू कॉल समथिंग सोल, इट हैज टू रिमेन आफ्टर बॉडी. नो, उसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ माइंड आफ्टर डेथ इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट. हमारे इसमें बोलते हैं मरने के बाद भी आत्मा का रहना, जीवित रहना, या रहना, होना. जीवित तो नहीं बोल सकते उसके विषय में, क्योंकि वो बॉडीली जीवित नहीं है, वो अलग तरीके से जीवित है, ट्रांसेंडेंटल वे में जीवित. कुछ डाउट है इसमें? हाँ, yes, ultimately. And that's why if you contemplate upon the highest idea, no, locus of ideas is in soul, including the idea of good. But yes, but वो आइडिया में सबसे हाईएस्ट है तो वो भी आइडिया ही है, बट आइडिया रियल है, इमेजिनरी नहीं है. नो, कॉन्वर्जिंग पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग नहीं है, सबसे टॉप है, सबको एग्जैक्टली इंक्लूसिव पॉइंट है, नॉट ओरिजिनेटिंग पॉइंट. आइडिया ओरिजिनेट होते ही नहीं है, दे आर इटर्नल. नो, हाँ, सी वहां पे आइडियाज का मतलब होता है, वो मेरा थॉट वाला बात कर रहा है कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, वो तो हमारा लोकल अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर कन्वेंशनल दिस थिंग कि आइडिया का ओरिजिन है, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो. बट आइडिया का ओरिजिन वो नहीं है. आइडियाज आर इटर्नल, यू जस्ट टुक इट फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम वेयर? योर सोल. हाँ, रिविलेशन ऑफ आइडियाज. तो और I could मतलब I could actually recollect that idea that was already there in my soul. Yes, soul का कनेक्शन नहीं हुआ, बट बोलते हैं कि सोल में जो था उसका और थोड़ा बेटर कनेक्शन हुआ. यू कैन से दैट वे. ठीक है, तो आज का खत्म करते हैं. प्लेटो लगभग क्या 95% खत्म ही हो गया है. कल अरिस्टोटल ले लेंगे. कुछ डाउट है तो कल पूछ लेना. ठीक है, कल इस पे एक आध क्वेश्चन पूछेंगे तो लिख पाएंगे प्लेटो का. ठीक है, लेट अस ट्राई टू राइट क्वेश्चन टुमारो. ठीक है, and most likely on Saturday we will be discussing. I'll let you know the time, obviously, because our class will continue till Friday like normal. So Saturday most likely we'll have the discussion of the UPSC paper. So
इफ यू हैव टाइम यू कैन अटेंड लाइव, बेटर हो जाएगा, कुछ सवाल है बट उसके पहले थोड़ा देख लो पेपर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज इवन गायत्री, शिवानी, यू गो थ्रू द पेपर अ लिटिल बिट, यू नो, ट्राई टू एटलीस्ट जो पढ़े हैं चीजें इंडियन या फिर कुछ भी चीज ऐसे इधर उधर से थोड़ा सा, यू नो, प्ले विद इट बेसिकली, उसके साथ खेल लो, थोड़ा देख लो नेट पे. सो व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव बेटर you know, some readiness, some questions, some lacunas which I can fill, and then you will be like, okay, मुझे समझ में आ गया. And I am guaranteeing it will help you. Like anything, UPSC question paper is the gold mine for your knowledge. Select होना है तो, PhD करना है तो अलग बात है ना. वो PhD मैं कर लूंगा ना, आप क्यों कर रहे हैं, आप सिलेक्ट हो जाओ. तो my point is just go through the paper thoroughly as if you are a student and try to solve. उसके लिए आप बोलेंगे कि नेट पे कुछ 10-15 मिनट एक क्वेश्चन 5-10 मिनट दे दो, फिर उसके बाद नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं. हाँ, वेस्टर्न थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि नाम ही नहीं सुने हैं, बट फिर भी देख लो थोड़ा इधर उधर नेट पे डाल के क्या बोल रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, रैंडम, मजे में, मतलब बेसिकली यू नो लेजर टाइप्स, नॉट वेरी सीरियस, सो दैट इन द क्लास यू कैन आस्क सम क्वेश्चन. ओके, यस. हाँ, वो ना प्लेटो का सिर्फ उतना ही है जो सिलेबस में है, थियरी ऑफ आइडियाज एंड इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, बीच में छोड़ना पड़ेगा. एथिक्स ऑफ प्लेटो नहीं पढ़ना है, थियरी ऑफ आइडियाज पढ़ना है, ठीक है. इनिशियल उसका नहीं पढ़ना है, 2 मिनट बस हो गया, ठीक है, नहीं पढ़ना. नो नो, वो सब ऑब्वियसली ना, वो तो कहे ही नहीं सिलेबस में, ओनली थियरी ऑफ आइडिया, उसकी जो आइडिया, और वो तो वैसे आपको एक्सप्लेन हो ही गया पूरा, ठीक है. यस, वाई मसी, यस, क्रिटिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो 9 AM.